बट या डेफिनेटली सोशल मीडिया इज़ वेरी फार्मूला बेस्ड ना हो, तो हर चीज़ का है, तुमको पता है कि इवन विथ वीडियो एडिटिंग वो लोग करते हैं कि हमारा कॉन्वर्जेशन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्टिंग में डालेंगे, फिर इंट्रो डालेगा, फिर पूरा कॉन्वर्जेशन। ये वीडियो कभी हम वही करेंगे। Give your dog an orgasm. Please leave my dog. Disgusting. अच्छा, and clap दे, वापस दे, clap दे। स्टार्ट कैसे करेंगे? Start. Hi, my name is Ashin Anup and this is Nirman Chaudhary. ठीक है। ChatGPT यूज़ किया? नहीं, अभी तक नहीं। क्यों? कोई रीज़न नहीं है, बस मन नहीं किया। वैसे मैं और बाकी ये ट्राई कर रहा था, बट ChatGPT में स्पेसिफिकली गया नहीं अभी तक। Which AI did you try? मिड जर्नी, फिर एक राइटर बोल के है जो उससे पहले आया था फॉर राइटिंग, कॉपी राइटिंग, स्टफ लाइक दैट। डाली? हाँ, डॉली यूज़ किया है कुछ कुछ चीज़ें निकालने के लिए, फ़ोटो में से, बैकग्राउंड में से। ईजी हो जाता है काम, क्लोन स्टैम्प से तो बेटर है। नहीं, आई हैव यूज्ड AI टू मेक माई जॉब अ लिटिल ईजियर। 3D इफेक्ट, अपना पैरालैक्स इफेक्ट के लिए भी यूज़ किया एक बार, वो कुछ और ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड था। The first time that I heard about Midjourney and I went and used and I posted on my Instagram also, like post-apocalyptic Bombay in grunge style and वैसा बहुत जन like भी किया, लेकिन बहुत जन लाइक भी किया। that is important to know, बहुत जन like, ठीक है, validation भी मिला मेरे को, but yeah, बहुत ज़्यादा creative था tool, it's very creative I think the tool, but then Is it creative or is it like it allows you to be creative? that is the question, that's the reason we are probably even speaking right now about it. But yeah, coming back to that, that is sort of like the question, how afraid of AI are you? इतना जल्दी? सीधा into the game. Okay, I'll frame it again as a filmmaker, video maker, editor, animator, procrastinator. So how Yeah, I think as a procrastinator it is very beneficial अगर if you are able to use it in your own way. yeah, I don't think I'm afraid of AI, क्योंकि जब ये स्पेसिफिक प्रोफेशन में घुसने से पहले यू केम विद द एक्सपेक्टेशन कि शायद नहीं चलेगा, फिल्म मेकिंग हो या फिर फोटोग्राफी भी हो, शायद नहीं चलेगा, तो हमेशा से वो ये था, माइंडसेट था कि अगर ये नहीं तो कुछ ना कुछ करके जीना ही है, तो बट अभी लकीली हो गया जो भी होना है। तो ऐसा नहीं है कि अभी नहीं हुआ तो फिर ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। but don't you think that जैसा आप ये अपना जनरेशन है which came from just the starting work, जैसा अभी none of us went to film school or anything, हम लोग खुद से सीखा है, जो YouTube से सीख के हम लोग आ गया करके, so we are the generation that sort of like a lot of our peers also, a lot of people that we know, हम लोग YouTube से सीखा जो भी सीखने का था, editing ये वो जो भी है, even shooting or whatever, and फिर started applying it slowly in our work करके, and then we have come to a place now where we get paid to do the work that we do करके, however good or bad that is up to the people to decide, but we get paid to do that. But now with AI and with the current generation accepting it as they are, so do you think then we become, our work इतना साल का मेहनत becomes irrelevant? Now everyone is able to do exactly what we are able to do in some sense, not exactly, but in Not some exactly, sense. at least at this point. AI is very skilled like us, but to this point in time, कि अभी तक हम लोग ने जो किया है वो उसको पता है. But then humans always have this ability to one up us, humans. तो maybe if this piracy of people's artwork stops, मतलब जो अभी controversy है के साथ कि मेरे को पूछे बिना तूने मेरा artwork कैसे लिया, अगर उसका proper legalization और आगे से ऐसा नहीं हो रहा है, तो maybe you will have an advantage from the earlier artworks, maybe. When I made those Mid-Journey and Dali, I made those images and I was having fun, very creative. And then I saw a lot of my friends, artist friends, देखा मैंने बहुत सारे, they're all, you know, against AI, AI should be art. And I sort of got their point to some extent. बराबर बोल रहे हैं, उनका तो धंधा ही बंद हो जाएगा अगर people start making that. Like they've, you know, worked for so many years, come to a point where they can, you know, make illustrations, be commissioned. So then that got me thinking कि अपना जो काम है, वीडियो एडिटिंग हो गया, मोशन ग्राफिक्स हो गया, नहीं वो तो है. then what then, like तो द लेबर बेस्ड काम जो है वो डेफिनेटली उसका मार्केट बहुत छोटा हो जाएगा. बट आई थिंक क्रिएटिव और द obviously companies are not going to do it themselves, the CA is not going to, they will need people, बट वो पीपल का जो वर्कफोर्स है वो कम हो जाएगा. मतलब जैसे हम लोग कंटेंट मैनेजर का बात कर रहे थे, तो विल द कंटेंट मैनेजर्स लूज देयर जॉब? मे बी नॉट. वो काम तो उनका ही है कि वो जो बाहर निकालना है, कभी डालना है, किस इंटेंशन से डालना है, वो तो उनका रहेगा. देयर नीड्स टू बी समबडी टू डू इट. बट ग्राफिक डिजाइनर्स वर्किंग अंडर देम, छोटा मोटा जो काम करता था, जो स्किल्ड, मतलब जो लेबर इंटेंसिव काम करते थे, उनका काम सज जाएगा.
आई वॉज इन अभी बैंगलोर, अभी आई वॉज एट अ मिड साइज कॉर्पोरेट, एक शूट के लिए गया मैं, मतलब मिड साइज भी मतलब अच्छा खासा कॉर्पोरेट, बड़ा ऑफिस उनका. एंड आई मेट विद द डिजिटल मार्केटिंग टीम, शूट वगैरह हुआ. एंड आई सॉ एंड आई स्पोक टू वन ऑफ द मार्केटिंग टीम, and three of them sitting there with ChatGPT open, and they are working with ChatGPT to make the captions, because I would like to put content continuously डालने का है. I think after a certain point of time एक human भी थक जाता है ना आजकल, because the algorithm or whatever you call it is demanding so much content to be put continuously so that you get seen, your brand gets seen. Now they are using ChatGPT to make sure that all their content is always, you know, very nicely put together, has some masala, spice or whatever through ChatGPT. So no matter like how much you say AI is gonna come, it has come. I feel in that sense. Like now, it's slowly becoming much larger part of, and that's what I'm saying ना. पता ही कैसे चलेगा वो कैप्शन AI ने लिखा है या फिर नहीं, पता चलने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, फ्रैंकली डजेंट मैटर. बट या डेफिनेटली सोशल मीडिया इज़ वेरी फार्मूला बेस्ड ना हो, तो हर चीज़ का है. तुमको पता है कि इवन विद वीडियो एडिटिंग वो लोग करते हैं कि हमारा कॉन्वर्जेशन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्टिंग में डालेंगे, फिर इंट्रो डालेगा, फिर पूरा कॉन्वर्जेशन. ये वीडियो का भी हम वही करेंगे. तो इतना फार्मूला बेस्ड है कि एक एआई आसानी से इसको पहचान सकता है, माइट बी एबल टू राइट अ स्क्रिप्ट वेरी इजीली. तो अगर तुमने ऑलरेडी फार्मूला बनाया है तो तुमको वापस वो फार्मूला के बारे में सोचना क्यों है? तो लेट द कंप्यूटर डू इट. इट्स डेफिनेटली इज गोइंग टू आर्टिस्ट लोगों का पूल को छोटा करने वाला है, बट द पीपल हु आर गोइंग टू बेनिफिट इज गोइंग टू बेनिफिट अ लॉट इन टर्म्स ऑफ हैविंग टू थिंक, मतलब नॉट, क्योंकि हम लोग एज आर्टिस्ट पता है कि कोई भी स्क्रिप्ट लिखना सबसे मुश्किल काम होता है, तो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन सबसे मुश्किल काम होता है. चैट जीपीटी क्रेजी है, मैं डाला था. somebody is able to assist you and people who are able to take advantage oh of no, 100%. I have already started using it. I have used it in so many pictures that I've sent to clients. उसको use किया है to, you know, मेरा to get at least a starting half a day का work मेरा 1 घंटा 1.5 घंटे के अंदर खत्म हो गया. like एक starting point मिलना is very important. मतलब उसी में बहुत टाइम चला जाता है, 3-4 दिन चला जाता है कभी. but then वही डर है ना, अभी मैं ये यूज कर रहा है ChatGPT, we have no idea where it's going to go ahead. अभी तो चल मेरे को असिस्ट कर रहा है, फिर आके लात मारेगा तो. बट फिर वही हो गया ना, व्हेन फोटोग्राफी फर्स्ट केम इनटू द मेन स्ट्रीम, आर्टिस्ट लोगों को बहुत बड़ा तो तंगी है ना, कौन सा आर्टिस्ट इधर पैसा कमा रहे हैं? नो लिविंग आर्टिस्ट इधर. पेंटर्स का तभी बहुत बड़ा ये था कि टुवर्ड्स फोटोग्राफी, बिकॉज़ लेकिन आर्टिस्ट के तो बच गए ना, लेकिन उसके बाद बट अभी भी तो थ्राइविंग अगर ऐसा देखा जाएगा तो उसके कंपैरिजन में शायद बच गया है, बट अभी वी आर स्टिल थ्राइविंग नो इन अ वे. Okay, then this comes to the point that only the good ones remain. हाँ, the good ones remain. मतलब वही हो गया ना कि जब पायरेसी आया, टॉरेंट्स आया, तभी a lot of people got inside. मतलब एक बड़ा सा एक गेट खुल गया for so many people to come in. और अभी जब AI आया तो वो गेट अभी फिर से छोटा होने वाला है कि so many people will lose their jobs, but people will still remain. ना, ऐसा नहीं है कि आर्टिस्ट नहीं बचेंगे. मतलब the really passionate ones will remain. So ये double edged sword जैसा नहीं हो रहा है? तो मतलब as if AI आया taking a lot of over jobs, but then the top, like the cream of the crop, as in like the artists who completely out of box सोचते करते काम करते, उनका काम रह जाएगा करके. रह जाएगा. मतलब people who are able to make decisions based on their creativity. But not just, मतलब वो एक अच्छा चीज़ है because then you will be able to identify the best creative people in the world. But then उसमें बहुत सारा layers भी है, जैसे कि connection बहुत matter करता है. अपना प्रिविलेजेस बहुत मैटर करता है, तो वो भी बहुत प्लेन करेगा. कनेक्शंस मैटर करता है. नहीं, सबसे पहले तो वही हो गया ना. सी, इवन द पीपल हु माइट लूज देयर जॉब्स टू से ChatGPT, AI, ऑल ऑफ दिस आर लाइक पीपल हु आर ट्राइंग टू मेक अर्न अ डेली ब्रेड ना. लुक, दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम लाइक वेल टू डू बैकग्राउंड स्टफ लाइक दैट. थोड़ा बहुत सीखा है, दे आर बिट क्रिएटिव, तो ये करेगा. बट नाउ कम्स दिस वन वेबसाइट, तुम्हारा सब काम कर देगा, तुम्हारा अभी दूसरा कुछ ढूंढो करके. दैट्स वन थिंग. देयर आर मेनी पीपल जो बहुत मेहनत कर करके पहुंचा है टू अ पॉइंट, नाउ दे आर लाइक उनको काम मिलता है, कमीशन मिलता है. यू नो, मेक 10 इंस्टाग्राम स्टोरीज फॉर मी, 10 पोस्ट फॉर मी, ग्राफिक डिजाइन वाला. नाउ यू सी अडोब ब्रिंगिंग दैट अडोब एक्सप्रेस करके, जो कैनवा का कंप्यूटर टाइप से. Yeah, but the thing is the computer won't generate it itself, no. Somebody. हाँ, but creative tool तो निकल ही गया ना, person का sitting there and वो transform tool use करके कुछ बना. But that was mostly labor intensive, I think, more than creativity. नहीं, उसमें creativity कुछ तो था, like some तो था. कुछ तो creativity था ना, what kind of font you gonna choose, what color, मतलब it's very specifically talking about graphic. That, you know, मतलब creative control you would still have with AI. No, but then see, we know how our corporates work ना. Capitalism को तो फर्क नहीं पड़ता है क्या, as long as it is able to churn out whatever it wants to churn out. AI को बोला बना दे, डाल दे करके खत्म. जैसे I think a lot of
controversy today is like a lot of these Marvel movies का posters are so bad. Right. They're just Repetitive, हाँ. repetitive and the same shit. Like movie posters are like completely bad these days. कुछ भी संडास बनाता है. I see these YouTube channel पे really nice YouTube channels who take this bad movie posters and then correct it. It's very talented guys. Right, right. उसका नाम याद नहीं. But तो वही हो गया ना. लेकिन चलता है तो चला रहेगा करके तो फिर पब्लिक वो डालते रहेगा, कॉर्पोरेट्स डालते रहेगा, उनको फर्क नहीं पड़ने वाले कि वो क्रिएटिव हो रहा है नहीं हो रहा है करके एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. जैसे फैशन में बोलता है ना कि हर 20 साल में फैशन साइकिल होता है करके, पीपल आर नॉट हैप्पी विद व्हाट दे कम अप विद, सो दे ऑलवेज चेंज. मतलब ऐसा भी नहीं कि हमेशा नया भी निकालना है, दे गो बैक एंड देन ब्रिंग इट बैक. सो हमेशा वो देयर इज अ नीड फॉर चेंज इन ह्यूमन ये, तो देयर इज नो, मतलब humans are always trying to one up each other. That's what I'm saying. See, over the course of 1000 years, people are trying to one up each other. उसने ये किया तो मैं ये करूँगा, उसने ये किया तो मैं वो करूँगा. Feel smarter. How do you come across as smarter than the smarter and keep doing, keep innovating, revolution ये वो. But now this time, our fight has transformed not human versus human. We have gone to human versus AI, something that is built by a certain few people for the specific goal कि how much more can we make it as human, and then उसके बाद क्या, and then you're like मे बी उसके ऊपर भी जा सकता है, and then how do you compete with something like that? Yeah, I think मतलब humans are very predictable anyway. हाँ, so when computers can start to predict कि अभी next creative decision क्या होगा, तो maybe then it will be. वो AI बोलेगा मतलब even before you go क्या चाहिए तेरे को, 2 पोस्टर देता है मेरे को ये ले. हाँ, वैसा कुछ. तो फिर I think it might be able to come up with its own ideas also. मतलब एक pattern उसको obviously दिखेगा कि अच्छा this is how humans innovate, and then it starts to learn and do it, then maybe. Also even with ChatGPT वगैरह, because they're all based on learning models ना, they're all learning from somewhere, learning from the past, but from a database also. I was reading somewhere about the idea that they're learning from a very set base by a very few people curating what that thing is learning, being used by the wider world. हाँ, तो वो क्या उसको प्रॉपर चीज़ पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, वो इट्स लाइक वो बच्चा मतलब वो प्रॉपर चीज़ पढ़ रहा है कि नहीं, कि उसको बाकी का वर्ल्ड भी समझेगा, कंटेक्स्ट ऑफ वेयर एवरीवन एल्स इज कमिंग फ्रॉम, और इवन इमेजेस ऑल्सो, what kind of images it uses to represent different people, different cultures, या फिर जो भी डालेगा तो क्या, बिकॉज तुम इंडिया वगैरह डालेगा तो वही स्टीरियोटिपिकल इमेजेस ही निकलते हैं, क्योंकि उसका टैग्स होता है ना कि मतलब व्हेन यू टैग अ फोटो देन इंडियन, दैट्स वेयर द टैग्स गोस, तो फिर वो अल्टीमेटली वही वो स्टीरियोटाइप टिपिकली यही बाहर आता है. And don't you think then there is too much power like if this becomes a huge part of our life, daily life, you know, सब जगह पे हम लोग AI यूज कर रहा है करके, and this kind of learning model ChatGPT है वीडियो एडिटिंग के लिए, इसके लिए, and it's making its own decisions and we get to used to it making things for us or whatever, but it all of that is being fed by only a select few number of people and their biases. This is going to another level of कि किधर AI gonna kill us whatever, but so if AI is able to वही मतलब अभी तक it's able to learn but not able to make decisions of मतलब make interpret of its own, I believe. तो जब वो चालू हो जाएगा when it starts reading अपना science fiction books जहाँ पे हमारा फैंटेसी रहा है अबाउट AI taking over, maybe it will start getting ideas. मैं ChatGPT पे डाल रहा था उस दिन, I was typing something, मेरे को तन्वी बोलता है, तो whenever I type something on ChatGPT ना, so you can just type give me 10 pointers ऐसा, but मैं I type it like a normal human being ना, can you please give me, like तो please क्या बोल रहा है इसको, AI मशीन इसको, और अरे अभी please बोलेगा तो बाद में अपने साथ अच्छा रहेगा, उसको याद रहेगा मैंने उससे इज्जत से बात किया है ऐसे, तो बाद में अपने को मारेगा भी रहेगा नहीं. Okay, but then coming back to the main point that we were talking about, at this point or say 10 years into the future, do you feel that your work, your bread and butter in any way is threatened by AI? Currently, I don't feel that threatened because I think एक point पे you rely on your connections also. वही मैं बोला ना, that is the good part also, the saddest part also. Great. Artistry is not just about your work. It's about the people you meet and that, kids, is the lesson for today. So maybe if कुछ disagreement हो जाता है, फिर then I'll have to start fresh. क्या करेगा? नहीं चला. I feel like there would always be an opportunity. मैं फार्मर बनने का सोच रहा हूँ. बट हाँ, एक पोस्ट देखा था मैंने रिसेंटली किसी को डालते हुए कि AI won't take over your jobs, people who use AI will take over your jobs. That's the, I think. वही है ना, कैपिटलिज्म स्टिल pitting people against people only. People who are able to take advantage will. वही हो गया जब
Crypto भी आया, but then it failed miserably. But people who were able to get in earlier And get out also. took advantage. अभी AI से I don't think anybody is going to get out. तो But AI तो we are completely letting it go. yeah. तू कर तेरे हिसाब से करके. We want it to go to that point. Like most scientists want it to go to that point. You do whatever you feel is right. It wants the machine to do that. पता नहीं. Every time a technology wave comes, the people मतलब हमेशा एक सेक्टर ऑफ पीपल होता है जो बहुत जुड़ा होता है अपने एनालॉग वेस में. तो हमेशा ऐसा देखा गया है एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी का ट्रेंड्स कि जो अडेप्ट करते हैं वो लोग सर्वाइव करते हैं. अभी टाइपराइटर्स का बात करें या फिर फिल्म कैमरास का बात करें तो पीपल हु आर एबल टू अडेप्ट वुड सर्वाइव. एंड फिर वो एक नीश कैटेगरी बन जाएगा. शायद 2-3 हॉबीज करेंगे तुम्हारे जैसा. देन वही प्रॉब्लम है. बट आई थिंक आर्ट के लिए हमेशा होगा. एनालॉग आर्ट, एनालॉग नहीं, जो फिजिकल आर्ट के लिए हमेशा एक बेस होगा. इवन विथ सो मच डिजिटल थिंग्स हैपनिंग, people are still so a lot of artists who are very passionate about using their hands and pencils and paints. उसमें एक अलग जॉय है जैसे फिल्म एनालॉग कैमरा में टू गेट इट डेवलप. तो ये मतलब एक फ्लिप मतलब आई थिंक जितना आर्टिस्ट थे 20 साल पहले उतना ही अभी रहेंगे आगे जाके. वो बस एक अभी एक बस एक मतलब एक क्रिप्टो जैसा हो गया ये जो आर्ट रेवोल्यूशन बीच में जो हुआ विद ये ऑफ सॉफ्टवेयर का जो कंज्यूमर बेस्ड होने के बाद से और फिर ये इंस्टाग्राम और रील्स आने से जो एक ग्राफ ऊपर गया वो अभी नीचे आ जाएगा. ओके. नहीं पता नहीं, इंस्टाग्राम पे तो इन्फ्लुएंसर्स तो बढ़ते ही जा रहे हैं. एवरीवन वांट्स टू बी कुछ और करेंगे यार जहाँ पे पैसा है. एक्टर, कॉमेडियन, डांसर. हाँ वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे पैसा है या फिर जहाँ पे कुछ इजीली बन सकता है. देयर इज ऑलवेज पीपल हु वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ अ सर्टेन ट्रेंड. देयर आर पीपल हु डू इट फॉर द लव ऑफ द आर्ट. और यू नो दोस एआई यूट्यूबर्स ना, नहीं वैसा अगर भर दिया तो पूरा लोग इमेजिन एंटायरिटी ऑफ योर सोशल मीडिया इज लाइक दैट. बट कौन देखेगा. देख हाँ बट देन द सीजी इज आल्सो विल गेट टू अ सर्टेन पॉइंट कि यू डोंट लाइक अवतार देख लो यार, हाफ द मूवी तो यू फॉरगेट कि साला दिस पीपल डोंट एग्जिस्ट. या like if they could do that with blue people, tall blue 6 foot people that they don't exist but still in your head like हाँ है करके real है, वो leaf real है, वो plant real है. so what वो तो नॉर्मल ऐसा इसके साथ भी क्या नहीं कर सकते. What if then almost entirety because of AI, entirety of social media is just computer generated imagery and people computer dancing. TikTok dances. maybe then value of art would reduce greatly. But वही हो गया फिर then you know there are a lot of copies of Mona Lisa but you know which one has the most value. मतलब AI ने बहुत सारा आर्ट बना लिया but if there is a अगर तुम अपना ब्रांड बना पाते हो in the coming times like people even if AI can create something that he would do but if उसके साथ people का नाम भी अगर लग गया तो it becomes a valuable item. So I think then it depends on the brand you are able to make. Brand building becomes very important if you want to be successful as an artist. Yeah, I think that applies not just to artists but also to I think our profession के अंदर also everyone also. But ठीक है यार मतलब I think लोग तो हमेशा नया मतलब alternative adapt तो कर ही लेते हैं. और remember but that was वो एक दो ट्राई करने दिया उसके बाद paywall आ गया उसका और ChatGPT पे भी paywall के पीछे जा रहा है. So do you think that will reduce it a bit? Like that people have to pay premium to you know be able to access such tools. I don't know. नहीं मतलब it won't matter to company. They the people who are hiring people it won't matter to them. No, they would obviously choose ChatGPT over somebody you have to take care of. अरे क्या ऐसा बात कर रहे हैं. मैं बोल रहा ना that's the reality of. वो तो बोल रहा that's what we are afraid of ना. That's the thing. But will ChatGPT be able to shoot a video? Well, it might be able to create, but shoot documentaries of what's happening in the world. I don't know, 30-40 years back, if you told people इतना भी कर रहा है ChatGPT तो public परेशान हो जाता था. 20 years from now, who knows what it can do. It might be able to take from मतलब जो current footages है उसके ऊपर कुछ बना सकता है, but वो भी perfectly नहीं. Obviously, video तो बहुत आगे की बात है. Yeah. Properly, मतलब believable video बनाना. Yeah. But to no, that's what I'm saying. Maybe not with a camera. मतलब tripod के ऊपर AI आके तो ये तो नहीं आई रोबोट तो नहीं करने वाले इधर आके कोई बनाने वाला है. But I'm saying computer generated imagery अभी जैसा all this you know real time rendering. Right. Yeah. You know you put real time rendering, take all of that, you put ChatGPT together, you put DALI का creativity or whatever you call it, I'll call it creativity, mash it up all together तो easily 2 मिनट का कुछ एक वीडियो बना ही सकते हैं ना. Which could in some sense be liked by people if people can go like movies
what people are watching these days and on Instagram जो भी देख रहे हैं लोग. अभी तूने बोला तो मेरे को कुछ दिमाग में आया कि एआई जिस जिस इसमें चल रहा है तो आर्ट कहीं ना कहीं सफ़र करेगा. अभी तक मैं बोला था कि आर्ट के लिए अच्छा, बट मेरे को अभी लग रहा है सफ़र करेगा, क्योंकि लेट्स से कोई एक एमेच्योर फोटोग्राफर है, उसने फ़ोटो लिया कुछ किसी चीज़ का, फिर कंप्यूटर को बोला कि दिस इज़ माय फोटो, यू जस्ट मेक द कंपोजिशन बेटर, देन व्हाट, मतलब देन इट्स लाइक यू टेक अवे द एंटायर आर्ट. Yeah, and you can do that on DALL-E right now. You can put your photo, and if you want to remove object, you can replace objects. रिमूव ठीक है, बट इफ यू आर एबल टू लाइक कि change the entire angle of it because the computer understands what's Yeah, happening in the... yeah. It can do that. It can do, and you can like replace objects. कि हाँ ये composition के लिए थोड़ा सा अगर ये निकल गया ना, इसके जगह पे अगर ये कर दिया मैंने, उधर अगर एक flower आ गया, that is something still people do on Photoshop. Even Steve McCurry probably. Yeah. But at some point, if the computer, AI is literally able to travel through your photograph and to find the best angle. कर ही सकता है. And travel through a photograph sounds sci-fi, but it is what people are doing with lidar and everything. So anyway, I think नए वाले iPhones पे कर सकता है तुम ना 3D grammetry अगर किया. Yeah, then it reduces art. The beauty of. I think all the high-end phones में you can change the focus का plane, right? Yeah. वो तो काफी टाइम से है, तो हाँ वो भी हो सकता है अभी something is out of focus. मतलब you are a shitty photographer and your main subject is out of focus, and then फिर you put out a photo and maybe it looks good after everything that you've done with it, no doubt maybe it looks good, and then you put it into a competition or a contest with others who are have done like proper mehnat, sit down and mehnat and composition and framing and then taken that photo, but then this photo wins, then what? हाँ, so then if AI अभी तो बहुत free model दिखा रहे हैं वो लोग कि जैसे कि it's accessible for all, but when it becomes a commercial thing like everything has been, so then art would be a thing for the people who have money. है ना, they can literally do anything with their devices. तो वही हो गया ना, फिर जिसके पास पैसा है, जिसके पास privilege है, जिसके पास क्या बोलते हैं means है, वही बनाएगा फिर art. Again, the best art. Isn't it weird like how we went from technology democratizing everything for everyone now, and we are again coming back to the funnel of possibly it only going again back to the people who can pay. People who make stuff on DALL-E, Midjourney जो भी है ना, they have no right to. It's fun to make if you're not an artist and you're making something really creative out of the world जो भी कुछ बना रहा है, but they have no right to copyright it. I saw some posts वगैरह Twitter, LinkedIn पे where people were like you cannot steal this, is my creation. No, fuck you, that's not your creation. You make it, you share it with the world, but I don't think anyone should be able to copyright AI created images. Even Midjourney, probably. Yeah. Getting back to the pros, अगर बोलना है अभी इतना कौन बोलने के बाद कि then there are a lot of ideas that we have every day and we don't do it because बहुत tasking काम होता है कि 99 ideas में से शायद 1% idea हम लोग actually commit करके उसको बाहर निकालेंगे. So this makes it easier to मतलब conceptualize and actually make things work. तुम्हारे दिमाग में कुछ idea, तुमने जल्दी से prompt डाला और फिर तुमको वो मिल गया. And so many people who don't have access to or don't have the technical knowledge of doing these things, उनके लिए भी एक it's fun. अच्छा चीज़ है, मतलब or anything, it is like absolutely fun. I saw the other day someone did you see those मतलब Marvel superheroes sitting in old timey Kerala? कितना creative था, कितना सही था. The idea behind this. The idea is so very creative. That's a whole the prompt जो भी डाला रहेगा must have been so creative. I think stuff like that other artists are not making. So then I have the option now to do that. But वही है कि it should not be like copyrighted and which is very difficult to execute it as an art project. Yeah. Or even Photoshop maybe it's very time consuming and extremely time consuming. You have a job 3-4 दिन चले जाएगा जो वो 2 सेकंड में करने का कोशिश कर रहा है करके 100%. And maybe it's not art worth spending time over also. मतलब now that I think about it. मैं उस दिन मैं देखा क्या Indian brides as astronauts. Yeah, it's a good idea, but funny, maybe not. It was funny, but why would anyone? Yeah, putting so much time into it. So मतलब आसानी से हो गया. Now everybody knows what it looks like, and we can go back home. Yeah. तो वैसा pros है, but then वही है commercialization I think is a big ये when it becomes a commercial. When capitalism takes over, then I think it becomes a very dangerous. All in all, जो भी है मतलब अगला for the next 5 years अपने टेंशन नहीं है. Filmmakers, video editors. It's best to adapt. I would say it's best to adapt to AI and work with AI and don't lose your jobs. If you want to like stick out as an hipster, you will like die. Your profession would. इधर PNG में एक ये डालते हैं कि AI ऐसा आशिन को बोल रहा work with AI or you lose your jobs.
नहीं मतलब मेक योर लाइफ इजियर, मतलब हम लोग को पता है कि अपना 9 to 5 जॉब नहीं है एंड वी स्पेंड, मतलब हमारा वीकेंड्स भी चला जाता है काम करने में, एटलीस्ट थिंकिंग अबाउट इट, Yeah. कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट इट, मतलब सो इफ यू आर एबल टू साइड लोड इट मतलब onto something else 100%. and then you're able to rest and then आराम से Yeah, many अपना of those time tools निकलता are now part of my process, slowly going into my daily है. work. It's very ऐसा. helpful. I wouldn't say कि it's completely killing your profession. It's helping you also. Yeah. But But we there is say always but we say this from a point of view कि अपने अभी तक अपने गले तक आया नहीं है वो. For artists, digital artists, उनके लिए very on the face type है. Mid journey पे सब जगह पे please, thank you देने के बाद ChatGPT को thank you so much, please remember me. AI को बोल देने का please remember me that you know I have said thank you, I'm very nice to you. Eventually आएगा पीछे वो. अरे लेकिन बोल तो सही. प्लीज कीप सब्सक्राइबिंग. वो तो है बोलेगा नहीं लाइफ में. thank you so much.